Students, today we will start unit 1 class 11th units and measurement, and here we will discuss the topic relation among the various physical quantity, which is very important topic according to HTET, DSSB or the CTET or any other competitive exam for the science student, and also it is very important for the class 11th final exam. Okay, so first we take an example: centripetal force acting on a particle of the mass m with a velocity v in circle of the radius r. So here we have a circle which has the radius r, and here on a particle it has the centripetal force represented by the Fc, and according to given statement, this centripetal force is depend on m, v and r. So you can say that this centripetal force is directly proportional to m की पावर a and v की पावर b and r की पावर c. जिन जिन पर भी वो क्वांटिटी डिपेंड कर रही है, यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन लेके देन वी रिप्रेजेंट लाइक दिस, एंड द डायमेंशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड शुड बी सेम. ओके, ये हमें पता ही है कि वो सेम होंगे. हेयर वी कैन राइट Fc इक्वल टू k m a v b r c, and on the left hand side dimension of the centripetal force we know that this will be given as m l t minus 2, right? And on the right hand side dimensions are m की पावर a, okay, v l t minus 1 b, and here r के जो डायमेंशन होते हैं दैट इज l एंड पावर c. ओके, यहाँ पर आप सारे कैलकुलेट कर लीजिए. m वालों को एक तरफ, l वालों को एक तरफ एंड t वालों को एक तरफ कर लीजिए. तो m का आपके पास आ जाएगा m a एंड l b प्लस c एंड t minus b. Right, now we have this dimension on the left hand side and the right hand side. Okay, so from this equation we can write a equal to 1 and also b plus c equal to 1, right? And also minus b equal to minus 2. देखिए m की पावर a, इट मीन्स जो यहाँ पर a की वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल टू 1. l की पावर ऑन द राइट हैंड साइड b प्लस c, सो दिस b प्लस c इक्विवेलेंट टू दिस 1, एंड t की पावर माइनस b, सो हेयर वी कैन राइट माइनस b इक्वल टू माइनस 2. ओके, सो b इक्वल टू यू कैन राइट 2. पुट दिस वैल्यू 2 plus c equal to 1, so c equal to 1 minus 2 equal to minus 1. So here we have the value a equal to 1, c equal to minus 1 and b equal to 2. Put all these value in this formula. So then Fc equal to k m v 2 and c minus r minus 1. So we can write this will be equal k m v square divided by r. K is constant, okay, and this is the relation between the various quantity with respect to centripetal force. Fc equal to k m v square divided by r. Now second example is time period t of the oscillation of a gas bubble depend on the total energy E, pressure P and the density D. Find the relation of t. 2 times यहाँ पर relation लिखा गया है, एक 1 time ही आएगा. Okay, so similarly we take the time period is directly proportional to P power A means pressure raised to power a, density d power b and energy E power c.
ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को हम सोल्व करते हैं. देन वी कैन राइट D इक्वल टू K P की पावर A D की पावर B E की पावर C. Dimension on both side should be same. So dimension on the left and right, we know that this will be M0 L0 T1. Okay, and then this will be equal to pressure के dimension and power A, density and energy and which has the power B and C. So यहाँ पर हम लोग एक साथ ही लिख देते हैं. pressure के dimension we know that is equivalent to M L minus 1 T minus 2, right? Density के we know M L minus 3 T 0 and energy we know that M L2 T minus 2. P की पावर A थी तो यहाँ पर पावर A, यहाँ पावर B, यहाँ पर पावर C. ओके, सो नाउ डायमेंशंस इकट्ठे कर दीजिए. M की टोटल डायमेंशन हमारे पास हो जाएंगे M A प्लस B प्लस C एंड L के हमारे पास हो जाएंगे -A माइनस 3B प्लस 2C, राइट. एंड T के लिए हमारे पास हो जाएंगे -2A माइनस 2C. So according to principle of the homogeneity, we can write A plus B plus C equal to 0 and minus A minus 3B plus 2C equal to 0 and minus 2A minus 2C equal to 1, right. So here we can write A minus A and minus C equal to 1 by 2. Or also you can write A plus C equal to minus 1 by 2, right. Now if we solve all these three equations, then we find out value of C equal to 1 by 3 and A equal to minus 5 by 6 and B equal to 1 by 2. You can solve it easily by the equation first. Suppose this is second equation, this is third equation and suppose this is fourth equation. Okay, by adding and subtracting and multiplying to any other numbers, and then we have the solution of these. C equal to 1 by 3, A equal to minus 5 by 6 and the B equal to 1 by 2. Then T can be write K P raised to power minus 5 by 6 and D 1 by 2 and E 1 by 3. Okay, so formula we have, or you can say that relation between the time period of the oscillation with the pressure, density and the energy, this will be equal to K D 1 by 2 E 1 by 3 and divided by P 5 by 6. Okay, so this is the formula of the time period with the various quantity E, D and P. Next question is, the frequency of vibration nu of the string must depend on the length L of the string, tension T and the mass per unit length small m of the string. Derive the relation for the frequency nu. Okay, so nu is directly proportional to m L की पावर A, T की पावर B and small m पावर C, right. डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम सोल्व करेंगे देन न्यू डायरेक्टली इक्वल टू K L की पावर A, T की पावर B and M की पावर C. डायमेंशन हम पुट कर देते हैं लेफ्ट एंड राइट में और राइट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन जो आपके बनेंगे दैट इज M0 L0 T minus 1. राइट हैंड साइड में जो डायमेंशन बनेंगे दैट इज L A and tension T is here tension, तो M1 L1 and T minus 2
B. And here this m shows the mass per unit length, so its dimension is given by ml minus 1. Okay, not equal to only m, mass per unit length. So here we take ml minus 1 and power c. So सबको इकट्ठा कर दीजिए, m के आपके पास आ जाएंगे b प्लस सी, एल की आ जाएगी आपके पास a प्लस बी माइनस सी एंड t माइनस 2b. ठीक है, कंपैरिजन कर लीजिए. सो b प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 माइनस 2b इक्वल टू माइनस 1. Okay, when we solve all these equation, then we get the value c equal to minus 1 by 2 and b equal to positive 1 by 2 and a equal to, here we get minus 1. Right? So all these value of the a, b, c, now we have c equal to minus 1 by 2 and b equal to positive 1 by 2 and a equal to minus 1. So put all these value in this equation, then we have the formula nu equal to k l की power minus 1 and t 1 by 2 and m minus 1 by 2. Also we can write nu equal to k divide by में l and square root of t upon में m. Okay, so this is the formula for the frequency with respect to the quantity l, t and m. So इस टाइप के नंबर ऑफ न्यूमेरिकल वी हैव विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द HTET, CTET, DSSB or any other competitive exam, NEET, JEE, and also these topics, these numericals related to this topic are very important for also the board exam. Okay, thank you. If you like it, then subscribe my channel. Thank you very much.